हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ बेसिकली मैं 10th क्लास की बात कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ वोकैबलरी फ्रेजेस और ओपनिंग लाइन एंडिंग लाइन ऑफ द चैप्टर्स शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स जस्ट क्वेरी कि मैम हम इतना अच्छा लिखते हैं, बहुत सारा लिख के आते हैं, एक एक पेज का आंसर लिख के आते हैं, बट हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मार्क्स इसलिए आपके लिटरेचर में डिडक्ट होते हैं क्योंकि आप गुड फ्रेजेस नहीं यूज करते हो, वोकैबलरी नहीं यूज करते हो, आपकी एंडिंग और ओपनिंग लाइन जो है वो कैची नहीं होती है, इंप्रेसिव नहीं होती है। इसलिए एग्जामिनर को आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर आप देते हो, वो अप टू द मार्क नहीं लगता है। तो आज मैं आपके साथ ये जो पूरी सीरीज है, इसमें आपके साथ मैं फ्रेजेस, वोकैबलरी, ओपनिंग लाइन, एंडिंग लाइन ये शेयर करूंगी। एंड आई 100% गारंटेड कि ये करने के बाद, ये यूज करने के बाद आपके मार्क्स जो हैं वो डेफिनेटली अपलिफ्ट होंगे, डेफिनेटली उसमें जो है इंप्रूवमेंट आएगी और आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज चैप्टर हमें आता है, उसकी हमें स्टोरी भी पता है, समरी भी पता है, हमें अच्छे से क्लियर है, बट हमें उसको लिखना नहीं आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन एंड गेट एंड रेडी फॉर गेनिंग गुड मार्क्स। स्नेक, vocabulary, picture, earthen pot, earth brown, brown like soil, yellow brown silkiness, relaxed movement, unhurried, calm and slow, venomous, poisonous, clumsy law, thick piece of wood, protest of the heart, inner guilt, king in exile, noble creature forced away. Some phrases are a powerful reflection on man's conflict with nature, fear conditioned by social education, guilt arising from loss of compassion, instinctive violence versus moral awareness. Now, here are some more phrases about snake. A symbol of dignity and calmness, move with royal grace, represents the beauty of nature, non-aggressive and peaceful creature. So these are the phrases which you can use to get good grades in your exam. So now here I am just giving you some phrases about the poet. Torn between fear and admiration, influenced by societal conditioning, suffered immediate moral regret, realize his mistake too late. Now, opening lines are: the poem Snake by D.H. Lawrence explored the deep-rooted fear of humans towards nature. In Snake, the poet presents a movement of moral conflicts between instinct and conscience. The poem reflects how social conditioning overpowered the human sensitivity. So these are the opening lines which you can use as it is in your answers. Now, concluding and the ending lines are: the poet realizes that his action was driven by fear, not reason. The poem concludes with a deep sense of guilt and self-condemnation. Thus, Lawrence urged mankind to coexist peacefully with nature. Now, the values we are learning from the lesson is respect for all living beings, compassion towards nature, moral courage, self-realization and guilt. Message the poem is conveying with everyone is: all living beings deserve respect and compassion. Violence towards nature arises from fear and ignorance. True humanity lies in coexistence, not domination. So use these all phrases to get good grades. Hope you like this video. Thank you so much.